I would like to congratulate the whole team of Lego Publication and the authors. मेरा नाम डॉक्टर हिनाना बर्जिस है और ये द महजूर जो है मेरी दूसरी किताब है। जो मेरी पहली किताब थी वो साहित्य अकेडमी दिल्ली से रिलीज़ हुई थी, वो उर्दू शायरी की किताब है। और ये किताब जो है ये मिडिल ईस्ट बेस्ड है, मतलब ये कहानी है जो मिडिल ईस्ट में जिसके किरदार वो सब जो उनकी प्रेजेंस है वो सब वहाँ पे है। तो उस तरह से एक नई किताब है कश्मीर की ऑडियंस के लिए, जो पहले ऐसी कोई किताब लिखी नहीं गई। This book that I bring you, the Mahzoor, in Arabic it means the forbidden, Al-Mahzoor, and it's a story, a romantic thriller actually based around the Nafud Desert, which I call the wildest desert of the Middle East. I think you should read this once because a book of this kind has never been written before in Kashmir. I worked around the Nafud Desert and that was inspiration enough. It's a romantic thriller and ख़ास ये है कि एक बार आप खोलें पढ़ें तो सब कुछ मैं बता दूंगी तो फिर बुक में कुछ रह नहीं जाएगा. It's basically something to do with clan wars and how clan wars affect the lives of people who are involved in it. You could take it as to a different level, to any kind of war, any issue, any kind of conflict that is manifest in the world. But essentially what I want to convey is that something that's forbidden will definitely lead to a bleed. So that's what the subtitle is, the Mahzoor. It's a love story, but if it's forbidden, it will bleed.